सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं वो गेम जिसको खेलते हुए बहुत ही लोगों के पीसी टूट गए, किसी का कीबोर्ड और किसी का माउस। जी हाँ, आपने सही समझा, गेटिंग ओवर इट। तो हमारी गेम चल चुकी है, तो चलो फिर खेलते हैं। और भाई मुझे वैसे मैंने पहले इस वीडियो बनाने से पहले खेल कर देखी, मुझे इतनी टफ तो लगी नहीं। बाकी आगे जाके देखते हैं क्या चलता है इसमें। तो अरे यार ये क्या यार, चढ़ जा भाई, चढ़ जा यार। आई थिंक यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो, नहीं पीछे पीछे, यस। ओह शिट, कोई नहीं, दोबारा से भाई, हम भी प्रो हैं फिर। अरे यार, नहीं मैं नूब ब्रो, मैं नूब, यस आई एम नूब, यस। There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. And don't worry, I'll save your progress, always. Even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002, titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzuo, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. चल मुझे लगता है चढ़ने वाला नहीं है भाई, मुझे नहीं लगता यार चढ़ेगा अभी नहीं। चढ़ जा भाई, प्लीज प्लीज भैया, प्लीज बाबू भैया, मान जाओ प्लीज। अरे देखा, मैं प्रो हूँ भाई। Anyway, when you start Sexy Hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the game. It might take you an hour to get over that tree, and a lot of people never got past it. Prod and you poke at it, exploring the limits of your reach and your strength, trying to find a way up and over. And there's a sense of truth in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are fake. You can be completely confident in your ability to get through them once you have the correct method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in Sexy Hiking is real. 1, 2, 3, 1, 2, 3, yes. 1, 2, 3. The obstacles in Sexy Hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazzuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game about climbing.
A funny thing happened to me as I was building this map. I'd have an idea for a new obstacle, and I'd build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them. And it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. अभी मैं जाऊंगा यार प्लीज भाई चल जाए यार ऊपर क्यों दिमाग फ्राई कर रहा है यार भाई प्लीज चल यार प्लीज प्लीज यार चल जा यार क्या यार मेरा भेजा क्यों फ्राई कर रहे हैं यार चल चल यार फिर से यार ये वो जो फट्टा सा लगाया है ये थोड़ा सा छोटा नहीं कर सकते थे इतना बड़ा क्या करेगा बंदा इतने बड़े को मुझे भाई समझ नहीं आ रही इन गेम वालों की यार क्या से यहाँ से मैं कहाँ से जाऊँगा यार थोड़ी सी जगह भी तो चाहिए बंदे को गेम वाले भी ना बस भेजा फ्राई करने के लिए बनाते हैं गेम भाई मुझे लगता है ये गेम बनी फ्रस्ट्रेटिंग के लिए ये गेम नहीं है भाई ये तो एक दिमाग खराब करने वाला ऐप है भाई कैरिमिनाटी भाई की भी कोई गलती नहीं है यार इनका प्रेसी तोड़ना जायज था भाई Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration. A real punch in the gut. तो नीचे नहीं गए यहाँ तक कि आना बहुत मुश्किल है मेरे लिए तो भाई क्योंकि मैं प्रो हूँ ना तो ज़्यादा मुश्किल लगता है मुझे अरे यार शट भाई बच गई भाई ऊपर चल भाई ओ यार शट ओ भाई मारो मुझे मारो यार क्या करूं मैं भाई चल भाई चल Oof, sorry about that. Oof, sorry about that. भाई यार तेरी क्या गलती है गलती तो इस गेम को बनाने वाली की है चल भाई चल खत्म मुझे नहीं लगता आज यार ये ऊपर जाएगा या नहीं यहीं पे घूमे जा रहा है भाई ये तो भाई भाई प्लीज नीचे कोई ऐसे चल भाई चल यार चल अबे पकड़ ले यार उसको चलो भाई बार से यार वहीं पे इतनी ऊपर जाकर मैं नीचे आ गया फिर से भाई ऐसे मजा नहीं आता यार गेम खेलने का ये गेम मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी भाई अच्छी है बट फ्रस्ट्रेटिंग है यार दिमाग खराब हो जाता है बंदे का खेल कर भाई अब तो मैं ऊपर जाकर रहूंगा जो मर्जी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऊपर जाऊंगा चल oh shit Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. यार मैंने नहीं खेलनी यार भाई ये गेम बस बहुत हो गया बस This thing that we call failure. खत्म बाय बाय सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दो